Hello, Assalamu alaikum friends. I am Hussein Lagari. We are here for your English class. Ms. Shameela is here. I would like to ask Ms. Shameela to start her lecture. Ms. Shameela, can we start now? Assalamu alaikum everyone else, and I hope that everybody is fine. So today we are going to start a poem. The name of the poem is Under the Greenwood Tree. This is a song basically As You Like It, which is by William Shakespeare. So before starting the poem, we will know a little bit about the William Shakespeare, and then we will know about that why this song has been written by William Shakespeare. So we are going to continue. William Shakespeare is the greatest playwright of England. Many would say that he was the greatest dramatist in world literature. He wrote many kinds of drama, history, romance, comedy, and tragedy. His plays are famous all over the world. He was a great poet. He wrote many songs and sonnets. He was a wonderful poetic craftsman indeed. No writer has peopled his works with such a wide range of characters or touches so many aspects of human behaviors. No poetry can excel his in power and beauty. His genius has hardly any parallel in drama or poetry. To know English and not to read Shakespeare is a misfortune of the worst kind. This is not only one poem which he has written, there are many more. And as we have discussed over there, that not only he is writing the poem, he was also the that many kinds of dramas on history, romance, comedy, and tragedy. And that is very much true until and unless you will not supposed to be know about the William Shakespeare. तो मीन्स आपको लिटरेचर में मजा ही नहीं आएगा. Wherever you are just going to discuss about the English literature, so it is necessary for us to know about William Shakespeare. Whenever literature word is coming, obviously, so that Shakespeare must be there. Without Shakespeare, your literature is incomplete. अच्छा, एक और बात, whatever the poems he has been written, excuse me, so these all are based on the reality. And he has also written the poem in the form of the sonnet as well, that where he has just not only given the background, he has just written the whole history regarding the poem in the form of the poem, that is called the sonnet, which can be divided into 18 stanzas, but the whole story has been mentioned. Here in this poem, we are going to discuss about only 2 stanzas, and over there you will discuss that how he is touching the real life with the words. So in next slides, we will discuss further about the William Shakespeare and little bit about the poem too. As You Like It is one of the most popular comedies of William Shakespeare. So this is not only the poem, basically this is a song. So the song is from the play As You Like It, a very popular comedy written by William Shakespeare. It is sung by Ammons, a character in the play. Okay? Ammons is the character which has been played in that drama, comedy drama. And Ammons is a nobleman. He lives the life of an exile with a duke and his followers in the forest of Arden. When we will start the novel, so that we will discuss about the duke and the Arden as well. And then here we are discussing how he has spent the life in a jungle, in a woods, and then how peacefully they were living over there. Even not only living over there, they are also calling to the people who wants to join them. And without any fear, without any hesitation, they are calling in the form of the poem that you must come over here, and then you will see that there is a peaceful environment
and then you will be happy. And if you are in the mood of a song, ज़ाहिर-सी बात है जब हम अच्छा मौसम देखेंगे, अच्छी जगह देखेंगे तो हमारा गुनगुनाने को, गाने को भी दिल करेगा। So that according to the Shakespeare, he has given the free hand to the people कि आप आएँ और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का गाना गा सकें और सुकून के साथ रह सकें और कुछ टाइम स्पेंड कर सकें इस जगह पे। So next, yes. Now here we are discussing the wicked brother of Duke has robbed him of his estate and driven him to exile. Like all the songs of Shakespeare, this one too is completely relevant to the situation. When we will start novel, so that we will discuss about the Duke Michael, and we will also discuss about the enemy as well कि उसके भाई ने उसे ज़ाहिर है वो jealousy feel करता था, उसको किस तरीके से capture किया, and then that how hard life he has spent over there. So over there the same thing he is just mentioning that he has given the example of the Duke Michael कि उसके भाई ने उसको किस तरीके से kidnap किया था, and he has just kept him in the another place where nobody knows about him, and the person to whom who wants to marry, so that he didn't like, that is the reason behind it, so that he has caught him and robbed him. तो इसी तरह like all the songs of Shakespeare, this one is too completely relevant to the situation. तो whatever we have discussed, maybe आप में से कुछ को मालूम भी होगा regarding the novel, तो whatever the situation has been discussed in that novel, this is somehow relevant with that novel कि वही situation थी, वही सारी conditions थी, and then still he is just telling that you should have to enjoy the life. कोई भी हमारे circumstances हो, कैसे भी हमारे हालात हो, it is necessary कि हमने उनमें किस तरीके से अपनी बात मनवानी है और उस condition से how do we have to come out to spend the life peacefully. Next. Okay, now contextual study is there. These lines are from a song in the play. The lines we will discuss in the poem, okay? As You Like It, a very popular comedy written by William Shakespeare. The song is sung by Emmons. अच्छा इसको song भी किसने sung किया था? ये Emmons ने sing किया था. A character in the play. जो कि आपको पता है कॉमेडी एक कैरेक्टर उसको गिवन था, कॉमेडी प्ले में उसको कैरेक्टर दिया गया था. And Emmons is a nobleman. He lives the life of an exile with the duke and his followers and in the forest of Arden. As we have already discussed that he has spent the resting of his life over there, and he wanted to live peacefully life, and then call to the other people to come and then enjoy the life as he has spent over there. This is the contextual meaning of this poem. Next. Okay, on the other hand, they are discussing about the brother, wicked brother of the duke has robbed him of his estate and driven him to exile. Emmons sings that life in the forest is simple and happy. One has to face winter and rough weather, no doubt, but is free from the tortures of human enemy. अच्छा यहाँ पे इन्होंने किस चीज को लिंक किया है इस पोएम में कि बताने का मकसद यही है कि that even somebody will kidnap you, so what will happen, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा टफ हो जाती है. It is very difficult for us to spend the life in a jungle or anywhere else if somebody has already kidnapped us. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे इन्होंने क्या बताई है कि एमन सिंग्स दैट लाइफ इन द फॉरेस्ट इज सिंपल एंड हैप्पी. ये जो एमियंस है इसने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सिंपल और हैप्पी बनाया हुआ है. वन हैज टू फेस विंटर. वालेकुम अस्सलाम साइमा, and hope that you are fine. Simple and happy. One has to face winter and rough. अब वो कह रहा है यहाँ पे whenever you will come, you will spend the life over there. But do remember one thing: without any fear, you will have to spend the life here. What is the reason behind it? The reason behind it, there isn't any enemy. अब normally क्या होता है कि अगर हमारे कोई भी enemies हैं surrounding में, Alhamdulillah, I am also fine by the grace of Allah Almighty. तो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी से fear होता है, और कुछ fear तो हमारे इस तरह का होते हैं कि might be somebody will kidnap us and take the revenge from us. अगर हमारी ऐसी कोई condition है, whatever the properties matter, there are others matter.
बट विलियम शेक्सपियर का यहाँ पे क्या कहना है, ही हैज गिवन द मैसेज टू द एज अ कैरेक्टर ऑफ द एमियंस, एमन्स भी सेम कैरेक्टर जो कि कॉमेडी में परफॉर्म किया। वहां पे कहने का मकसद ही ये है कि दैट यू विल कम ओवर देयर विदाउट एनी फियर। इस जंगल में जब तुम आओगे तुम्हें पीस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें नेचर का अंदाजा होगा कि किस किस्म की नेचर है। इसके अलावा क्या होगा, तुम यहाँ जो करना चाहते हो करोगे विदाउट एनी फियर। बट डू रिमेम्बर वन थिंग, दैट इफ यू वांट टू स्पेंड द टाइम ओवर हियर, so that what would happen with you, that the harsh weather can be impact you, क्योंकि वेदर जो है वो सर्दियों वाला है और ये आपकी बॉडी को टॉर्च कर सकता है। so there is only one enemy, which is weather, which is cold weather especially, and which can be tortures your body, harm your body, and difficult for you to live happily. But if you will just suppose that the peaceful mind you are having, so that it is very much easy for you to spend the time quite easily. They will have to face some hardship when the cold weather sets in the stormy window, winds blow, but देयर विल बी नो ह्यूमन एनिमीज टू टॉर्चर देम। वही बात जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपको पीसफुल माइंड वहां पे मिलेगा, आप वहां पे अपनी सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं पीसफुली कामली। बट एक चीज अपने जहन में रखेंगे, दैट इफ डू यू थिंक द एनिमी कुड बी देयर, सो इट कुड बी द हार्श वेदर, क्योंकि वहां पे जो विंड्स चल रही हैं वो काफी स्टॉर्मी है। और आपको पता है जाहिर है यू आर लिविंग इन अ जंगल, सो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीज, so which is not easy for you to survive among them. But no doubt it is better that a human being can be kidnapped you, and then he will just torture you and then wanted to take a revenge from you. That is the better that you will spend your life resting of the life over there, easily happily enjoy over there. अगर कोई एनिमी है तो वो आपका बस हार्श वेदर है, अगर आप उसके साथ फाइट कर लेते हैं, सो दिस इज नॉट अ बिग डील, you can enjoy your life over there. Next. Okay, इसके अलावा एमियंस क्या कह रहे हैं, invites his listener to the pleasant life of the forest, whoever keep himself away from worldly ambitions and loves free life in the open air will find happiness in the woods. Of course, he will have to hunt his own food and be satisfied with what he gets. बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा है एमियंस ने। एमियंस क्या कह रहा है, ऑब्वियसली वंस वी स्टार्टेड टू लिव समवेयर एल्स सो दैट वी विल कॉल अदर्स। ऐसा ही एमियंस के साथ भी हुआ कि ही स्टार्टेड टू कॉल द अदर पीपल बिकॉज ही वाज स्पेंडिंग द प्लीजेंट लाइफ ओवर देयर in the forest. But what he said, that whosoever keep himself away from worldly ambitions and loves free life, अगर कोई चाहता है that means you will spend the life happily over there, so what they will have to do in the open air will find happiness in the wood. तो उसको it is necessary for them that they will find the happiness into the wood. फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा, वहीं आपको पीसफुल लाइफ का पता चलेगा, वहीं आपको पता चलेगा कि हाउ टू स्पेंड द लाइफ इन अ जंगल। सो इट इज नेसेसरी दैट अगर हम यहाँ बैठे बैठे बातें कर लें कि नहीं वहां तो कोई भी नहीं होगा, अंधेरा होगा और कोई एनिमल हम पे अटैक कर सकते हैं, तो देन यू आर अनेबल टू गेट एनी चार्म ऑफ दैट प्लेस। सो अगर एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, सो अकॉर्डिंग टू हिम यू शुड हैव टू मूव समवेयर एल्स। यहाँ पे मैं छोटी सी एक डिस्कशन करती चलूंगी, रॉबिन्सन क्रूसो, might be some of you have read that novel. अब रॉबिन्सन क्रूसो के साथ क्या हुआ था, that he was just going on a voyage with his friends. So what had happened with him, that his ship has been fallen down, all of his friend has drawn into the water and died. अब वहां पे क्या हुआ था, when he has opened his eyes, so he has seen कि वहां पे कोई भी नहीं था, it is just an island. अब आइलैंड था एंड ही डिडंट नो ऑल अबाउट दैट हाउ टू लिव इन दैट प्लेस। उसको कुछ आइडिया ही नहीं था क्योंकि वो अपना बिजनेस करना चाहता था, लेकिन अपने फ्रेंड्स के जोर देने पे, क्योंकि उनको ट्रेडिंग का सिस्टम नहीं आता था, उनको नहीं पता था हाउ टू डू द ट्रेड बिजनेस, तो उसके कहने पे उसने अपने फ्रेंड्स को कहा कि ठीक है मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ एंड आई विल गिव द क्लू टू यू दैट हाउ टू डू द बिजनेस। तो उन्हें सिखाने की पर्पज से गया था। But when he was all alone and then he has seen that he has found the shoe of his friend, some biscuits, some water bottles or clothes, these type of things he has found at the end.
What had happened with him that he was unable to move because he didn't know anything about it, so that he has just went to the ship side and then take out the hammock, and then he has hung over there, he has laid down into the hammock. फिर उसने सोचना शुरू किया कि अब मुझे लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, देयर इज नोबडी एल्स ओवर देयर, और माइट बी यहाँ पे कोई ना कोई एनिमल भी आ जाए, एनी क्रिएचर विल कम ओवर देयर एंड देन कैन हंट मी, कैन किल मी. तो he was just thinking, and now he has later on he has set his mind. अब जब उसने अपना माइंड सेट कर लिया, सो दैट ही वाज थिंकिंग अबाउट दैट मुझे अब यही रहना है, एंड देन हाउ हार्डली ही हैज स्पेंट द लाइफ ऑन एन आइलैंड. व्हेन यू विल रीड द नॉवेल यू विल अंडरस्टैंड द सेम केस इज ओवर देयर, कि जंगलात है, सबको मालूम है डिफिकल्ट है, कि वहां पे रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, नोबडी कैन सर्वाइव ओवर देयर. लेकिन वंस यू विल हैव टू टेक अ चांस, किसी भी एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी विल हैव टू लिसन. आप वो एक्सपीरियंस करेंगे, यू move over there, and then you will have to try to spend the life, and then you will realize either how happy you will be or how happy you will not. So he will have to hunt on his own food and be satisfied with what he gets. अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, हैप्पीनेस की बात हो रही है इन द वर्ड्स, कि आपने रहना शुरू करिए दैट यू विल बी हैप्पी. देन ऑफ कोर्स फिर क्या होगा, ही विल हैव टू हंट हिज ओन फूड. आपको खुद जद्दोजहद करनी है, आपने कहाँ से अपना फूड हासिल करना है, कोई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई आपको पका के नहीं देगा. एवरीथिंग कैन बी डन बाय योरसेल्फ. जब आप सारे काम अपने हाथ से खुद से करोगे, देन यू विल बी सेटिस्फाइड. एंड देन हाउ यू विल सेटिस्फाई दैट व्हाट यू हैव गेट्स, वट एवर यू हैव गॉट. अब आपने जो भी कुछ हासिल किया है, आपने अपनी स्ट्रगल से हासिल किया है. इफ somebody will give in a tray to you, so that it can be useless for you. अगर आप खुद करना चाहते हैं, that will be helpful for you to do. Now what we are going to do, next slide. He will also have to face some hardship when cold weather sets in, a stormy winds blow, but there will certainly be no human enemies to torture them. बस एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जो भी चीजें आएंगी वो आपके वेदर से रिगार्डिंग आएगी, जो कि आपकी स्किन को खराब कर देंगी. एंड जाहिर बात है, वहां पे कोई आपके पास लग्जरियस थिंग्स विल नॉट बी अवेलेबल सो दैट यू कैन यूज इट. बट डू रिमेम्बर कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग आपको टॉर्चर करते हैं, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई ह्यूमन बीइंग आए और आपको टॉर्चर करे या कोई किडनैप आपको करके ले जाए. दैट इज नॉट possible, so that you will feel free over there to spend the life. Next. Now one by one we are discussing the stanza, and we will discuss about the meanings as well, and some questions I have written which I want that you should have to answer me by yourself, or either you can search on the internet. लेकिन थोड़ी सी आप लोग स्ट्रगल करेंगे, then you will learn more about it. You can also ask the question from me at the end of this class, so that I will be available for your answer, or during class you can also ask. It will be fruitful for us. So अब हम पढ़ना शुरू कर दें. नंबर 1 स्टैंडर्ड. अंडर द ग्रीनवुड ट्री who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. This is stanza number 1. Stanza number 2. Now do remember, here they are discussing about the hither means here, and then the sweet bird's throat means you will have to sing over there the into the bird's voice. You will have to take out, call out, we can say that, a chirping sound. ठीक है, जिस तरीके से एक बर्ड सिंग कर रहे होते हैं, so that the person can also sing over there. Onto this is basically into, and then I don't think so there is another word which is difficult for you. So that here under the greenwood tree who loves to lie with me. ठीक है ना, ये दावत दे रहा है that whosoever wants to come with him, so that they can go and join him and turn his merry note unto the sweet bird's throat. और अगर आपका किसी भी चीज को दिल चाहता है, you will not just keep this thing into the mind.
आपने वो चीज अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, आपने बताना है दैट हाउ हैप्पी यू आर देयर। कम इधर, कम इधर, कम इधर, वो कॉल कर रहे बार बार कि आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ। एंड देन यहाँ आके तुम देखो, नो एनिमी, कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। बट विंटर एंड रफ वेदर, हाँ अगर कोई दुश्मन मिलेगा तो रफ वेदर होगा और सर्दी होगी, जो कि ऑब्वियसली जंगलात में तो आपको मालूम है कि रात का टाइम होता है, सो वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन अ जंगल एट नाइट। इसके अलावा कोई आपका एनिमी नहीं होगा, यू कैन स्टे कामली ओवर देयर। नेक्स्ट स्लाइड। स्टैंजा नंबर 2 में क्या कह रहे हैं अब ये, they are saying who doth ambitious shun and loves to live I the sun, seeking the food he eats and pleased with what he gets. Come hither, come hither, come hither, here shall he see no enemy but winter and rough weather. यहाँ पे भी ये स्ट्रेंजा क्या कह रहा है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, दैट यहाँ पे आपका पर्पस होना चाहिए। वंस इन अ वाइल यू हैव सेट योर माइंड so that the life could be easy. सबसे पहले आपने अपना ambitions set करना है, and then loves to live I the sun, and then you will have to set that wherever you are going to live, you will have to live over there and you will have to love that place. अगर आप उस जगह से प्यार ही नहीं करोगे तो obviously the place will be very difficult for you to live. आपको कहीं पे भी रहना है, कहीं पे भी जाना है, अपनी जगह बनाने के लिए आपको इन चीजों का ख्याल रखना है दैट यू शुड हैव टू स्प्रेड इट। अगर आप स्प्रेड ही नहीं करोगे, ये चीज इनकलकेट ही नहीं करोगे, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा किसी भी जगह पे रहना। ओके नाउ कम इधर, कम इधर, कम इधर, अगेन वो कह रहा है कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, हियर शैल ही सी नो एनिमी। यहाँ के तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, दैट यू विल नॉट बी वेरी, व्हाट डू वी से, यू विल नॉट बी वेरी, यू आर नॉट इन फियर। ठीक है, आप फेयर में नहीं है किसी किस्म के, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको इंसिस्ट कर रहा है कम हियर, एंड इफ ही इज नॉट एम्बिशन वांट्स टू earn his bread by the sweat of his brow and is likely to be pleased with। अब वो वहां आके आपको किस चीज की तरफ मोटिवेट कर रहा है, दैट कि अगर आपको किसी चीज का फेयर नहीं है तो ऑब्वियसली आपने अपने ब्रेड की, फूड की खुद प्रिपरेशन करनी है, खुद बनाना है, और जब आप खुद बनाओगे, खुद जाओगे उसकी स्ट्रगल के लिए, तो आपको खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप डिपेंड करोगे वहां पे किसी पे। व्हाट ही रिसीव्स, ही इज मोस्ट वेलकम ओवर हियर बिकॉज देयर आर नो एनिमी। वो सबको बहुत ज्यादा वेलकम करके बुला रहे हैं और इंसिस्ट कर रहेगा तुम एक दफा तो यहाँ पे आओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है एक्सेप्ट विंटर और रफ वेदर। अगर कोई दुश्मन है तो वो ऑब्वियसली विंटर सीजन है, विंटर है यहाँ पे, और रफ वेदर है। नेक्स्ट। So we are going to discuss little bit about the summary as well. Up to summary means if you will understand the poem, so that the summary could be quite easy for you to write, or you are able to explain it by yourself. Okay, let me discuss line to line. This poem is written by William Shakespeare, which tells us about the joy and the bliss of living in nature without having any fears of enemy. देखें, सबसे बड़ी चीज हमें क्या देखने को मिल रही है, द नेचर। आप अगर नेचर को देखना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो, तो आप वहां पे जाओ। ओवर देयर यू विल हैव टू थैंक टू गॉड। अल्लाह ताला का आपने शुक्रिया अदा करना है कि द थिंग्स विच यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट इट इज इन रियलिटी। जब आप जाते हो जगहों पे तो आपको वो सारी चीजें रियलिटी में मिलेंगी, और जब रियलिटी में मिलेंगी तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहेगा अल्लाह अलमाइटी का कि कितनी खूबसूरत चीजें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं। Okay, and now the poet calls everyone to share his joy and to join him under the greenwood tree. अब यहाँ पे पोएट क्या कर रहा है,
बुला रहा है सबको, एक एक करके बुला रहा है कि भाई वो आए और अपनी जॉय को एंजॉय करे, यानी कि कोई गाने की सूरत में करे, कोई बैठने की सूरत में कोई करे, कोई हंसने की सूरत में करे। देयर आर डिफरेंट वे, लेकिन वो चाहता है कि वो ज्वाइन करें इन्हें। हिम अंडर द ग्रीन वुड ट्री, he also tells them to use sing merrily and listen to the cherry note of a happy bird। और इसके अलावा वो क्या इंसिस्ट कर रहे हैं इनसे कि यानी जो लोग यहाँ पे आए हैं उन्होंने गाना गाना है जस्ट लाइक द बर्ड्स, और क्या करना है, चेरी नोट ऑफ अ हैप्पी बर्ड। द पोएट asks those people who lack ambitions and love to live in the open sun and enjoy the food they seek to join them। और वो ये भी साथ साथ कह रहा है कि वो लोग जो कि एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपना खाना खुद बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को खुद जीना जानते हैं, तो उनको चाहिए कि वो यहाँ पे आए, उनके लिए ये बेस्ट जगह है। और जब वो आ जाएंगे यहाँ पे, दे विल फील हैप्पी के दे हैव जस्ट टेकन अ करेक्ट डिसीजन। अगर वो नहीं आना चाहते तो उनकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर क्या कह रहे हैं कि दे मस्ट कम, दे मस्ट एंजॉय over here। Now, the poet tells them that there shall be no enemy except the cold and rough weather। शेक्सपियर का भी कहना ये है कि यहाँ पे और तो कोई आपको एनिमी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एनिमी मिल रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरा एनिमी है, तो वो है सख्त ठंडा मौसम। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि मौसम बहुत कोल्ड है, और इस कोल्ड मौसम की वजह से, कोल्ड वेदर की वजह से आप ना बाहर निकल सकते हैं, आप ना फूड तैयार कर सकते हैं, और देयर आर मेनी मोर। लेकिन अगर आप जॉयफुल पर्सन हैं तो इसी मौसम में आप कुकिंग करना भी जानते हैं, क्योंकि चीजें मेल्ट होंगी तो पकेंगी ना। और इसी मौसम में आप बाहर जाके एंजॉय भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ, और आप करेंगे, बट नॉट ऑल, फ्यू ऑफ देम मस्ट बी गो देयर। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे बेटा मीनिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द मीनिंग्स, आई हैव रिटन सेपरेटली एज वेल। बेसिकली जो हिदर वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश है, न्यू इंग्लिश में हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, हेयर। न्यू इंग्लिश में इसे हेयर कहा जाता है, अदरवाइज ओल्ड इंग्लिश में इसे हिदर कहा जाता है। इसके अलावा रफ वेदर की बात हो रही है, और हेयर, और विंटर की बात हो रही है, विंटर शन रिजेक्ट की बात हो रही है, डेलिब्रेटली अवॉइड की बात हो रही है, यानी आप फौरन से किसी भी चीज को मना कर दो, दैट इज कॉल्ड शंट रिफ्यूज। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। Now here we are discussing the question one by one, so that can be helpful for you to write down the answers. Ji. Now pick out the main lines that mean sing such a manner as turn his merrily note unto the sweet bird throat. Hurry up, what does this line means? You will try to tell. I am just going to give the clue to you here that if you will talk about the poem, makes more sense. So do remember, if it is understood that the poem comes from the play As You Like It, the speaker asks his friends to come song with him underneath the tree, where they will find friendship and happiness. So keep this thing in your mind, then the answers will be easy for you. You will have to answer me directly or by typing sing in a such manner. What do you understand by this? Okay, and turn his merry note under the sweet bird's throat. Number two is one who wishes join me, who loves to lie with me. Yes, who loves to lie. अगर किसी ने ऐसे झूठ बोला है तो बताएं, अभी डिस्कस करें अबाउट इट। किसी ने नहीं बोला, कोई झूठ नहीं बोलता, थोड़ा बहुत तो सभी बोल लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपने बताना है वन हु विशेस टू ज्वाइन मी, हु लव्स टू लाई विद मी।
ठीक है, कौन उससे ज्वाइन करना चाहता है, कौन उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वाई डू यू थिंक द पीसफुल लाइफ कैन बी इन द jungle or woods. Okay, number 3 is who give up his desire of wealth, power, or fame, etc. Who doth ambition shun? अब आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारी डिजायर है। हम रहना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी कुछ विशेस होती हैं, हमारी कुछ डिजायर्स होती हैं जो कि फुलफिल नहीं होती। तो उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल दी थी कि आपको ब्रेड लोफ वट एवर हैज बीन रिक्वायर्ड, आपने उसी में गुजारा करना है, उसी को बनाना है, पकाना है, और फिर आपने खाना है अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। तो यहाँ पे ये आपसे ही पूछ रहे हैं कि लाइफ इन द फॉरेस्ट जो है वो आपकी डिजायर को, वेल्थ को पूरा करती है, क्या आपको अमाउंट देगी? क्या आप वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना, क्या वो फूड प्रोवाइड करेगी? सो बेटा यू मे हैव टू आंसर इट अबाउट इट। Here is shell, he sees the enemy. Each eats and pleased with what he gets. और whatever the people has brought for their food, आपने कोई उनसे कंपैरिजन नहीं करना अपना फूड का। आपने वो सुकून के साथ बैठ के खाना है और बहुत खुश होना है कि फूड बहुत मजे का था। दैट शुड बी द स्पिरिट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बस खा पी के आ जाए एंड देन यू नेवर नो कि व्हाट वुड हैपन। और या दूसरा कहे कि उसने सही नहीं पकाया या उसे खाना नहीं आता। वी आर नॉट हैविंग राइट्स और एनी ऑब्जेक्शन टू ऑब्जेक्ट एनीवन एल्स। दिस इज देयर ओन एफर्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु डज द पोएट इनवाइट टू ज्वाइन हिम? जी, यहाँ पे हम जिक्र करेंगे एमियंस का, जिन्होंने जिक्र किया है कि वो एक बॉय था और उसने ड्रामा में, जो कॉमेडी ड्रामा था, ही हैज पार्टिसिपेटेड ओवर हेयर। तो यहाँ पे आप किसको बोलेंगे कि पोएट इनवाइट टू ज्वाइन हिम, बिकॉज उसी की एग्जांपल दी जा रही है एंड ही वाज फोर्सिंग द अदर पीपल के वो लोग आए और वहां पे जो है अपनी लाइफ को स्पेंड करें। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या रीजन है, क्या वजह है यहाँ पे? सेकंड में ये बात कर रहे हैं हाउ शुड दैट पर्सन सिंग, व्हाट मैसेज डज द पर्सन कन्वे। हाउ शुड दैट पर्सन सिंग, अब मुझे बताइए कि किस तरीके से गाना चाहिए उस पर्सन को। क्योंकि जंगल है, वहां पे कोई भी नहीं रहता, आप जाके रहना शुरू कर रहे हैं, और अगर कोई होगा तो एक आधी कोई ह्यूमन बीइंग होगा। पीसफुल इन्वायरमेंट है, लेकिन आपका दिल चाह रहा है गुनगुनाने को, गाने को, तो आप कैसे मैनेज करोगे? सेकेंडली, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वेज? जी, क्या लगता है आपको कैसे कन्वे होगा मैसेज? नोबडी विल आंसर। द मैसेज यही है कि जिन लोगों को मालूम होता है कि वी आर हैविंग द एनिमीज एंड विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सरवाइव इन दिस सोसाइटी, तो उनको फिर ऐसी जगह चाहिए होती है जो बिल्कुल सुकून वाली जगह हो। और वो सुकून वाली जगह आज पोइट ने हमारे सामने रख दी है, वुड्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, दैट whosoever wants to go over there under the green woods, they will move over there and they will sing a song, they will just enjoy their own food by hunting themselves. Next. Okay, now here we are discussing about the theme of the poem. So whatever you have understood, you will have to concise it. You will have to write it down in your own words. मैं आपको hint दे देती हूँ that how to write down. You will have to write down first of all, I do you understand the poem, so that you will have to write down the poem makes more sense. Sense आ रहा है ना, makes more sense. Makes more sense. नहीं, फिलहाल तो मार्कर नहीं है, बोर्ड मार्कर है मेरे पास, so वो तो it is difficult to write on a diary. All right, students, so either you may know about that. The poem is clear to you, where we were under the greenwood tree.
अब आप जब भी थीम लिखेंगे, सो दैट यू विल नॉट सपोज टू बी थिंक अबाउट के थीम इज डिफिकल्ट फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे स्टार्ट करेंगे? द पोएट इन दिस पोएम हैज बीन रिटन और वट एवर, आइदर इफ यू वांट टू गिव द नेम ऑफ द राइटर और नॉट, इट्स अप टू यू. लेकिन अब यहाँ से जो हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं, स्वीट स्वीट बर्ड्स, ठीक है. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ही इज कॉलिंग अगेन एंड अगेन, हिदर की बात कर रहे हैं, दैट कम हियर विच इज इक्वल टू हियर, यू विल हैव टू टेक आउट. ठीक है. उसके बाद हमारे यहाँ क्या बात करें, एम्बिशन की बात हो रही है. एम्बिशन, जो भी आपका पर्पज है, अगर आपको फियर है लाइफ से कि भाई लाइफ हमारी फियरफुल है एंड वी शुड हैव टू मूव समवेयर एल्स, तो आप क्या करेंगे, एक एम्बिशन वर्ड यू विल हैव टू रिमेम्बर. इसके अलावा हमारे पास क्या है, लव्स टू लिव. अगर आपको प्यार है, अगर आप रहना चाहते हैं, तो देन यू विल हैव टू थिंक अबाउट कि विच प्लेस इज द पीसफुल प्लेस, सो दैट यू शुड हैव टू मूव देयर. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सीकिंग द फूड. हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई आपको बस बैठे बैठे ला कर देगा, आप में जुस्तजू होनी चाहिए. हाउ टू सीक द फूड, कैसे आपने हासिल करना है, कैसे आपने पकाना है, एंड देन यू विल हैव टू फुलफिल योर डिजायर. उसके बाद आप क्या करेंगे कि मीन्स फियरलेस हो जाएंगे. यू शुड बी फियरलेस कि यहाँ पे मेरा कोई दुश्मन नहीं है, और अगर कोई आपका एनिमी है तो वो है आपका जस्ट वेदर. और वेदर भी कौन सा, विंटर. विंटर वेदर है, ठीक है ना, विच कैन बी ड्राई इनफ. तो अब जब ये पॉइंट्स आप अपने जहन में रख लेंगे, तो इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए द थीम कुड बी वेरी इजी फॉर यू. आप वो थीम को लिख सकते हैं अपने अल्फाज में, राइट. एक दफा फिर बता दूं, यहाँ पे ग्रीन वुड जो वर्ड है आपका बार बार यूज हो रहा है, ग्रीन वुड ट्री, तो इसमें क्या है, वुडलैंड इन स्प्रिंग एंड समर. द लवली वर्ड हैज अनफॉर्चुनेटली गॉन आउट ऑफ द यूज. यहाँ पे ग्रीन वुड की जब भी बात करेंगे, आपको पता है हम नॉर्मली स्प्रिंग और समर की बात करते हैं, बट हेयर अकॉर्डिंग टू द पोयम द सीन हैज बीन चेंज. यहाँ पे कोल्ड वेदर की बात हो रही है. अब जाहिर बात है, कोल्ड वेदर में हर ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है घर से बाहर रहना. तो यहाँ पे आपको जिस तरह फूड के लिए सर्चिंग की जरूरत है, हंट करेंगे, पकाएंगे, खाएंगे, इसी तरह उस वेदर से फाइट करने के लिए कि हाउ टू सर्वाइव इन दैट वेदर, आपको ये करना होगा. ठीक है. नाउ नाउ थोड़ा सा मैं एक रिव्यू करवाना चाह रही हूँ अबाउट दिस पोएम. सो थोड़ा सा आप लोग सुने दैट व्हाट यू शुड हैव टू डू, and whatever we have discussed here in a summary, that is not complete. Hello, that is not a complete summary. That is according to my point of view, but once in a while you have completed your ideas or you have understood the poem, तो summary आप खुद लिखें, that can be good enough. अब यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा लिटिल बिट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द समरी के हाउ टू राइट डाउन दी समरी. अब समरी को आप लोग जब भी लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू रिमेम्बर दैट दिस पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम. एक इंट्रोडक्शन जो होता है, स्लाइट इंट्रोडक्शन ऑफ द, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रेफरेंस, वो देना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. यू विल हैव टू राइट डाउन. आफ्टर दैट यू विल हैव टू थिंक अबाउट ओनली द फर्स्ट स्टैंजा, के आपका जो पोएट है वो फर्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहा है. अच्छा, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, दिस इंटरेस्टिंग पोएम व्हिच इज टेकन फ्रॉम अंडर द ग्रीनवुड ट्री व्हिच इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर और फ्रॉम अ सॉन्ग एज यू लाइक इट. आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज इंटेलेक्चुअल पोएम और रियलिस्टिक पोएम और व्हाट डू वी से, इंटरेस्टिंग पोएम. तो आपके जहन में जो भी एडजेक्टिव आएगा, whenever you are going to write down the summary, आपने वो एडजेक्टिव यूज करना है, खुद से यूज करना है. आपने खुद ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि भाई मैंने ये पोएम रीड की है और अकॉर्डिंग टू दैट पोएम मुझे ये वाला जो इसका है ये वाला जो इसका एडजेक्टिव है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड विद दिस, सो दैट मैं इसको यूज करूंगी या करूंगा, राइट. उसके बाद हम आ जाते हैं एक्चुअली राइट डाउन दी समरी. उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टैंजा पे फोकस करेंगे. अब फर्स्ट स्टैंजा पे कैसे फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है कि दैट आपने आना है, आने की तरफ कन्विंस किया और आपने वहां बैठ के सिंगिंग करनी है. और सिंगिंग को किससे रिजेंबल किया है, बर्ड्स की, बर्ड्स के चिरपिंग साउंड से, राइट. अब आप लिख सकते हैं कि दिस इंटेलेक्चुअल पोएम और दिस ब्यूटीफुल पोएम अंडर द ग्रीनवुड ट्री व्हिच इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. In this poem, the poet loves to lie with the human under the greenwood tree. And if he wants to sing a happy song with the birds,
So he should come over there and start singing. On the other hand, you can also write down there you will, or the people will not see any enemy, and then you will have to face the winter. ये जो हमारे पास last line आ रही है, it is written about but winter and the rough weather, so that you will have to write down in your own word that you will have to face the weather condition which can be bad enough, and in this bad weather you will have to survive. तो जब भी हम कहीं जाते हैं, मूव करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सेट आवर माइंड. आपको अकॉर्डिंग टू योर माइंड Hello. वो चीजें प्रोवाइड नहीं होती, बट अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू शुड हैव Hello. टू सेट योर माइंड. सेट कर लेंगे एक दफा माइंड को, तो आपके पास क्या होगा, दैट जो सर्चिंग आपने करनी होगी दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. आपने जब फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट कर लिया, नाउ यू विल हैव टू थिंक अबाउट सेकंड Sorry. स्टेंजा. क्योंकि whenever we will write down the summary, आपने इन दोनों स्टेंजास को जम्बल्ड करना है, कंबाइन करना है in Are your you outside own or words. home? आप ट्राई करेंगे, you should try to avoid this as it is wording you will not supposed to be right. उसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेंजा पे. तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पोएट का क्या कहना है कि you come here, तो मीन्स यू विल हैव टू कम ओवर देयर एंड यू शुड हैव टू एंजॉय. तो यहाँ पे एम्बिशन की एक्चुअली बात आ रही है कि ये जो हमारे एम्बिशियस है, wants to learn his bread by, तो ये हमारा एम्बिशन नहीं होना चाहिए कि हम वंस इन अ वाइल कहीं चले गए एंड देन अकॉर्डिंग टू आवर एम्बिशियस द डिजायर्स कैन बी फुलफिल. यहाँ पे वो कह रहा है कि इफ यू आर नॉट एम्बिशियस एंड वांट टू लर्न your bread by the sweat of his bro and is likely to be pleased with what he receive, he is the most वेलकम ओवर हेयर. यानी कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुद स्ट्रगल कर सकते हो, फूड को हासिल कर सकते हो, देन आप यहाँ पे इजीली आ जाओ. लाइफ विल बी हैप्पी ओवर देयर, ओवर हेयर. ठीक है. और in the end what you will write down, you will simply write down that the speaker ask his friends or the fellows that come over there and then spend the life over there without any hardship, and then with peaceful mind or happiness you should spend. So in this way you will have to write down the summary. Any other question if you are having regarding this up to, so that you can also ask. This is very easy poem. And now next we will start in next poem, the character of a happy life, that over there we will discuss about the character. So I think that is enough for you. Now I am leaving. Thank you so much. Allah Hafiz.